Hello and welcome, dear students. Assalamu alaikum to everyone. My name is Gauhar Nabi, your mathematics educator. The topic today that I'm to delineate on, the topic that I will be discussing with you is regarding why do students struggle with mathematics. So this is the punchline of our topic. What is the punchline? Why do students struggle with mathematics? This is the topic that I'm to delineate on. So let's begin from the starting. Uh, as a mathematics educator, I'm in the field from past 10 years, teaching mathematics to different institutes, teaching mathematics to different schools. So as a mathematics educator, what I have observed in the field, there are various points that I'm to discuss today with you today. But the most important points, I will discuss these points one by one. The first, uh, the obstacle that our students are facing in mathematics, that they are taking mathematics as a subject. Rather, we have to uh, teach, we have to learn this subject as a language. It is more than a subject, I would say. So why I'm enforcing on the word, why I'm more focused, why mathematics is more than a subject, why it's a language, right? So why it's a language? If we go through the old books, the books that were taught during the Pythagorean era, the books that were taught during the Herodotus, right? So we find mostly that the books, there are various patterns, बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो पहले मैथमेटिशियन थे, वो ज़्यादातर फोकस करते थे पैटर्न्स पे, राइट? So why I'm focusing on mathematics as a language? It is the language because if we compare mathematics as a language with the language of English, English में हम क्या कर सकते हैं? We have choice. Let us suppose that if anyone has to say that मैं भूखा हूँ English में. So there are various ways to use this statement in English, that I'm starving, I'm feeling bit peckish, I'm hungry. So these are the, मतलब I mean to say, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें इंग्लिश में फ्रीडम है, एक ही स्टेटमेंट हम बहुत सारे तरीकों से बोल सकते हैं. But whenever we compare mathematics as a language, it is the language same as the language of English. But what is the difference here? Difference here is that we are restricted, we are bound. We are bound in this language. Bound in what sense? This language is in pure and natural form. We cannot replace the statements as we did in English. Let us suppose that I will just an example of the definition of I would say the rational numbers, right? Firstly, the if actives, passives, tenses, prepositions, these act as the grammar to the English language. So in the same way in mathematics, what is the grammar to this language? The grammar is definitions, axioms, right? Theorems. These act as the grammar to this subject. So what I was trying to say, that अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स जो एक लैंग्वेज है जो प्योर और नेचुरल फॉर्म में है, इसमें हम स्टेटमेंट्स को रिप्लेस नहीं कर सकते. स्टेटमेंट्स को क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते? Let us suppose that we will take an example of rational numbers. So we know that the definition of rational numbers, and numbers are said to be rational if they are in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. If we eliminate one single statement that q is not equal to 0, that
अगर हम एक सिंगल स्टेटमेंट इन फ्रॉम द बंच ऑफ द स्टेटमेंट्स कैंसिल करें कि क्यों हम 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं, then the whole beauty of this definition, it will all go in vain. ये सारा इसकी जो ब्यूटी है जो रैशनल नंबर्स की, ये सारा खत्म हो जाएगा. तो यहाँ हमें पता चलता है कि रैशनल नंबर जो है, रैशनल मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स इट्स अ लैंग्वेज, लेकिन हमें यहाँ रेस्ट्रिक्शंस है. रेस्ट्रिक्शंस किस बुनियाद पे है? रेस्ट्रिक्शंस इस बुनियाद पे है कि वी कांट रिप्लेस, we don't have much freedom in this language, right? As we have seen in as we are seeing in other languages, English, Arabic, or Kashmiri languages there. So now uh, I'm saying to you that it is a language. It's more than a subject, language, and also it is the patterns. It's the pattern recognition. Mathematics is all about pattern recognition. So how mathematics is all about the pattern recognition? Let me narrate you a story. The story is about the great mathematician. The great mathematician. The name of the mathematician is Carl. It is Carl Friedrich Gauss. One day, the teacher, he entered the 5th standard and he asked the students, could you kindly find the sum of natural numbers up to 100, 1, 2, 1, 2, 3, 4, so on to plus 100. आप ये खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनका जो तर्ज अमल है, उनकी जो मेंटालिटी है, उनका जो विजन है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो कैसा हो सकता है. हमारे सामने तो 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है वो हमें पता है कि उनकी लेवल क्या हो सकती है. So a teacher entered the 5th standard. Carl Friedrich, the teacher asked the question, can you find the sum 1, 2, 3, so on up to 100? So even it seems to be this problem. It seems to be very hard for a student who is in 12th standard, for even for a college student, if he is not acquainted of the concept that how can we find the sum of the natural numbers, right? So now टीचर इस वजह से, इस रीज़न के साथ क्लास में गया था. उसको अपनी जगह पता था कि आज मैं आराम करता हूँ तो बच्चों को मैं ऐसी प्रॉब्लम देता हूँ कि वो उस प्रॉब्लम में खुद फंस जाए, ताकि मेरा भी टाइम पास हो जाए क्लास में. तो मैं बैठ के वो आधा घंटा 40 मिनट जो है, मैं उस टाइम क्या करूँ, मैं उस टाइम रेस्ट करूँ, ठीक है. But there was one person in the classroom. There was one person in the classroom, and within seconds he raised his hand like the Rocky Bai of KGF. He raised the hand and said, "Sir, I did it." So who was he? Who was he? Who was the Rocky of that very class? Who was he? He was none other than Carl Friedrich Gauss, one of the great mathematician. Sir, I did it. तो जो टीचर था क्लास में, he got surprised कि इसने कैसे ये solve किया. What are the thought process? What is the thought process with which he solved, the Carl Friedrich Gauss solved that very question? वो असल में वो देखना चाहता था कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने वो कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व किया. Whenever he looked at his paper, he found this. What actually Carl Friedrich Gauss did in his paper. Initially, what he did in first line, sum up to 5th standard student. 5th standard, it's not a joke. It's not a joke. He was 5th standard student. What he did, he take the sum of the first term and he added the first term and the last term, that's 1 plus 100. Then second first, then last second last, then 2 plus 99, 3 plus 98, 4 plus 97,
first and last. Try to understand this. He was in fifth standard. Fifth standard. तो मैं सोच रहा हूं हमारे बच्चों को क्या हुआ है. तो 2 plus 99 plus so on to plus 50 plus 51. So then there and after what he write down in the next step. 1 plus 100 is 101. 2 plus 99 is 101. He added all these terms up to 50 plus 51. Here 101. So these are the sum. This is the sum of 101 terms. Only 101 terms are here. But how many times 101 terms are here? These 101 terms are 50 times. 50 times. 50 times. So in third step, he written down 50 times 101. So he was actually, what his brain was actually doing that time. He was a genius. Oh, he was a genius, I would say. Fifth standard, huh? तो मैं तो सोच रहा हूँ कि उसके हाथ चूमूं मैं. कहाँ है कार्ल फ्रेडरिक गॉस के हाथ? मतलब फिफ्थ स्टैंडर्ड में था बच्चा और उसने ये कारनामा कर दिखाया. एंड 50 प्लस 50 multiplied 101, and after finally he come to the conclusion that the sum of all these terms is 5050. Then there and after he found the sum 5050, right? तो जब उसके टीचर ने ये ऐसा देखा तो उसने तुरंत उसके पेरेंट्स को बुलाया. ही इज़ अल्टीमेट, ही इज़ फैबुलस. तो इसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा तवज्जो दें. तो मैं असल में कह रहा हूँ, तो ये एक ऐसा तरीका है कि हर किसी की मेंटालिटी सेम नहीं होती है. ये एक ऐसा तरीका है कि हम अपने बच्चों की क्रिएटिविटी को कैसे समझें. कैसे समझें. हमने उनको सिर्फ फंसा के रखा है दिस और दैट में. हमने अपने बच्चों को सिर्फ फंसा के रखा है वर्ब्स में, सिर्फ फंसा के रखा है प्रेपोजिशंस में, सिर्फ फंसा के रखा है एक्सेंट में. दिस इज द क्रिएटिविटी. वो खुद ही वक्त के साथ आ जाती है. दिस इज व्हाट वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन. जो एक फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसका जो नजरिया है वो कहां तक जा सकता है. एक फिफ्थ स्टैंडर्ड का बच्चा जो है, उसका जो सोचने का जो उसका जहन जो है, वो जमीन पे बैठ के वो क्या सोच सकता है. ये कोई स्टोरी मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं. ये इट्स रियलिटी. इट्स रियलिटी. और वही फिर वक्त के साथ आगे फिर वैसे ही शख्सियत जो है वक्त के साथ आगे कार्ल फ्रेडरिक गॉस बनती है. वैसी शख्सियत न्यूटन बनती है. वैसी शख्सियत जो है रामानुजन कहलाती है. वैसी शख्सियत जो है अर्वा गैलाइस कहलाती है. ही वॉज द यंगेस्ट मैथमेटिशियन डाइड इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स. इन द हिस्ट्री यंगेस्ट मैथमेटिशियन डाइड. तो ये कोई गुड़ियों का खेल नहीं है. हमने अपने बच्चों को फंसा के रखा है इंग्लिश में. अरे वो तो वक्त के साथ आ जाती है. बेटर इज टू फोकस ऑन द क्रिएटिविटी. बेटर इज टू फोकस ऑन द क्रिएटिविटी. खुदारा अपने बच्चों में आप समझें, अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें कि कहीं आपने उनको कैरिकुलम में तो फंसा के नहीं रखा है. कहीं आपने अपने बच्चे को इनसाइड द फोर वॉल्स फंसा के तो नहीं रखा है. क्या उसके अंदर क्रिएटिविटी थी? क्या वो क्रिएटिविटी उसके बाहर आ रही है कि नहीं? तो उसके बाद फिर then there and after the formula came up. This was the idea that turned the tables upside down. उसके बाद फिर formula आया. Whenever we have to find the sum of natural numbers 1 to infinity, then we have a formula. What is that formula? N into n plus 1 whole divided by 2. And I'm again repeating, sum of natural numbers up to infinity is up to n. This is n into n plus 1 whole divided by 2. तो उसके बाद, तब तक ये नहीं था, उसके बाद ये फॉर्मूला आया. I hope you have understood all the facts, all the things that I have elaborated. So I hope that you have got the crux of the topic, that हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं. तो रोना आता है आज, इस वजह से आता है जब इन बच्चों की हालत इंसान मार्केट में देखता है. आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे फिर कल को जो है, नो डाउट
आपका बच्चा अकाउंटेंट बनेगा, आपका बच्चा जूनियर असिस्टेंट बनेगा, क्या उसका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है? क्या उसकी आइडियोलॉजी जो है, क्या वो वही उसी एजुकेशन सिस्टम में फंस के तो नहीं है? क्या आपका बच्चा जो है वो उस एंट की मानंद मत है? एंट, व्हाट इज दैट एंट? वो चींटी, जिस चींटी के इर्द गिर्द हमने एक दायरा बनाया और वो एंट जो है उस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को फंसा के रखा है कैरिकुलम में, हमने अपने बच्चों को फंसा के रखा है ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग में, हमने अपने बच्चों को फंसा के रखा है यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट. नो, that's not the actual way of teaching and learning. Thank you so much. See you in the next session.